अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी होस्ट हुमैरा कुरैशी आज फिर एक नए मेहमान के साथ आपके प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद हुमैरा में हाजिर है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपको राइट मेडिकल बिलिंग के ताउन से पेश किया जाता है और इसके लिए हम के प्लेटफॉर्म के बेहद मशकूर हैं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं हर हफ्ते और इतवार की शाम, और इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड ऐसे प्रोफेशनल्स के साथ जो आपको फर्स्ट हैंड ऐसा नॉलेज देंगे जो फौरी तौर पे आपके काम आएगा। तो चलिए हम आज के अपने मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। फ़ाइज़ा हसीब। फ़ाइज़ा हसीब पाकिस्तान में पैदा हुई और यहाँ आने के बाद उन्होंने मास्टर्स किया इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा वो इस वक्त चेयरवुमन हैं फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ शिफा हेल्थ केयर। More than 15 years of experience with healthcare organizations in various roles. वो अपनी भी हेल्थ केयर कंसल्टिंग करती हैं और फुल टाइम डिफरेंट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इस वक्त भी मुंसलिक हैं। तो चलिए उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। सबसे पहले तो फ़ाइज़ा, मेरे शो में आने का बेहद शुक्रिया, वेलकम। Thank you so much, Dr. Humaira. It's nice to be here. हम जानना चाहेंगे आपसे कि शिफा जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ही वैल्यू रखती है, तो उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए कि वहाँ पे कैसे लोगों को जाना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, और उधर प्राइमरी केयर है या कोई स्पेशलिटी है, ये सब चीज़ें। जी एब्सोल्युटली। तो शिफा इज़ 1997 से एक्चुअली फॉर्म्ड हुई थी। अब हमारे पास अभी इस वक्त 3 क्लिनिक्स हैं, शुगर लैंड के अंदर, नॉर्थ वेस्ट के अंदर, और अभी हम नया क्लिनिक खोल रहा है साउथ वेस्ट 59 बीच नेट के ऊपर। एंड जो हमारी पॉपुलेशन रियली जो हम केटर करते हैं वो है अनइंश्योर्ड, अंडरसर्व्ड, लो इनकम रियली जनरली पॉपुलेशंस, बट हम हर किसी को देख सकते हैं, डिफरेंट नेशनैलिटीज़, डिफरेंट रिलीजन्स। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स वेरी ओपन। हमारे पास प्राइमरी केयर सर्विसेज आर ट्रेडिशनल, तो एनुअल वेलनेस विजिट्स, लैब वर्क अगर हो, आपका मेंटेनेंस चेकअप हो, तो सारा कुछ हम देखते हैं। उसके अलावा हम एक्सपैंड कर रहे हैं डेंटल के अंदर टू। तो स्टार्टिंग अक्टूबर वील हैव सम डेंटल सर्विसेज एज वेल। सो आपकी क्लीनिंग हो गई, थोड़ा सा माइनर डेंटल वर्क हो गया, वो भी सर्विसेज होंगी। उसके अलावा वी आर लुकिंग टू एक्सपेंड इनटू वुमेन्स हेल्थ एज वेल। देयर इज इवन दो हमारे रिसर्च हैज शोन वुमेन मेक द मोस्ट डिसीजंस इन द हाउस होल्ड, लेकिन वो अपना ख्याल नहीं रखती हैं। तो इसलिए हम केटर कर रहे हैं अपनी ख़वातीन के लिए, उनके हेल्थ के लिए हम स्पेशल प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये तो अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये बताइए कि मेडिकेयर, मेडिकेड, ये जो जब आप कह रही हैं कि सारे हर तरह के लोग आ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि जिनके पास इंश्योरेंसेस हैं वो भी आ सकते हैं? आप लोग इंश्योरेंस भी लेते हैं शिफा में? जी सॉरी, ग्रेट क्वेश्चन, ग्रेट क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। सो हम मेडिकेयर मेडिकेड ले लेते हैं, लेकिन हम कमर्शियल इंश्योरेंस नहीं लेते। उसके अलावा सेल्फ पे होता है। सो फॉर नॉर्मल पेशेंट्स जो पे कर सकते हैं उनके लिए $30 होती है पर विजिट, और अगर आप नहीं पे कर सकते तो हमारा क्वेश्चन और होता है जो हम चेक इन के ऊपर प्रोसेस करते हैं। तो इफ़ यू कांट पे तो फिर यू डोंट हैव टू पे एनी केयर, एसेंशियली एनी मनी फॉर द केयर। तो इसमें प्राइमरी केयर जो है उसके बारे में आपने बताया कि फिजिकल्स वगैरह हो सकते हैं और ये सारा, तो प्रिवेंटिव केयर का कॉन्सेप्ट क्या है और प्राइमरी केयर, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें लोगों को। नहीं, एब्सोल्युटली। सो आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट आई विल टेल यू फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव। एंड ऑनेस्टली आई थिंक हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा अपना ख्याल नहीं रखती। साउथ एशियंस, पाकिस्तानी तो डेफिनेटली नहीं रखते। रियली होता है कि आपने अपना एनुअल हर साल अपना एक चेकअप कराना होता है, जिसमें आपका फिजिकल होता है, आपका ब्लड वर्क होता है, जिससे डॉक्टर को पता चलता है कि आप कोई एलिवेशंस तो नहीं है डिफरेंट एंजाइम्स की, डिफरेंट थिंग्स की आपके ब्लड के अंदर। तो इट ट्रिगर्स आपकी हार्ट डिजीज़ एंड एनी अदर डिजीज़ जो हों। what मैं बताना चाहूँगी व्हाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट इज़ इन साउथ एशियन कम्युनिटीज़ अबाउट 50% ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैपन्स एट द under the age of 50, and within that 25% of it is less than 40 years. तो वो जो कॉन्सेप्ट था कि हम जब बूढ़े होएंगे या एल्डरली होएंगे तब बीमारी आएगी, बीमारी अब बहुत जल्दी आ रही है। तो इसलिए इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू गेट देयर चेकअप्स डन। सिमिलरली जो सिम्टम्स होते हैं वो आदमियों में डिफरेंट होते हैं और औरतों में डिफरेंट होते हैं। एंड औरतों के लिए तो मैं ऑल्सो कहूँगी अपने मेमोग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ कोर्स इज़ एन अर्ली स्क्रीनिंग प्रोसेस फॉर ब्रेस्ट कैंसर
awareness. So you know وہ بھی ہو سکتے ہیں. So that's one of the reasons I would say کہ it's really really important for people to do maintenance checks. تو شفا میں اس وقت جو فزیشینز ہیں وہ سب والنٹیئرز ہیں یا پرووائڈرز سب والنٹیئر ہیں؟ نہیں, we have our employed staff as well. We do get ہمارے ہوتے ہیں volunteer physicians as well, just because they want to give back to the community as well. And then sometimes we get specialists that volunteer their time as well. ہمارا goal ہے کہ انشاءاللہ in the next couple of years to grow the service lines, bring more physicians like cardiologists, neurologists, you know, the specialty endocrinologists to the clinic تاکہ وہ بھی access available ہو. But right now we have essentially primary care. تو لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کون سی زبان بولتے ہیں وہاں پہ؟ Oh, great question. So bilingual, English, Urdu and Spanish. اسپینش. اچھا اچھا, دیٹس ویری گڈ. اردو کیونکہ خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں جو ایلڈرلی پاپولیشن ہے جو امیگریٹ ہو کے آئے ہیں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش سے, ان کے لیے بہت چیلنجنگ ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ اپنے سمٹمز, اپنی کیفیت بتا نہیں پاتے. بالکل. تو اس میں اردو اسپیکر جو ڈاکٹرز ہیں یا کوئی پنجابی اسپیکرز ہیں, پشتو اسپیکرز ہیں, تو ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. نہیں بالکل. یہ اس وقت شفا میں مطلب پیشنٹس بہت سارے آ رہے ہیں یا کیا آپ کہیں گی کہ نمبر آف پیشنٹس؟ Honestly, since COVID, year over year, ہم نے 25% انکریز دیکھا ہے پیشنٹ پاپولیشن کے اندر, اینڈ دیٹس ان آور ایگزسٹنگ کلینکس. جو ہم نے کلینک نیا جو بن رہا ہے اور کھول رہا ہے وہ ایسی جگہ پہ ہے جو آپ کو پیشنٹس کے لیے ایزی ایکسیسیبل بھی ہے. اٹس رائٹ ان دا سینٹر آف دا سٹی, اینڈ دین پبلک ٹرانسپورٹ بھی وہاں پہ کنوینئنٹلی آ سکتی ہے. سو آئی مین آپ یہ it's hard to believe how much care is needed in the community because there's so many disparities of care. So the reason I anticipate there to be a lot of increase in volume. اور دس از امیزنگ کہ جو ڈینٹل کیئر ہے وہ ہمیشہ سے امریکہ جو ہے ایک طرح سے نوٹوریس ہے کہ جی یہاں پہ بڑی مہنگی ڈینٹل کیئر ہے, لیکن آئی ایم سینگ کہ دیر آر سو مینی نان پروفٹس جو ڈینٹل کیئر کو سب کے لیے ایکسیسیبل بنا رہے ہیں. جی بالکل. تو دس از اے بگ جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑا ٹرن میں دیکھ رہی ہوں ان ہیلتھ کیئر, بیکاز 20-25 سال مجھے بھی ہو گئے ہیں اور میں نے یہ محسوس کیا کہ اب ہیلتھ کیئر ہر طرف ایکسیسیبل ہوتی جا رہی ہے. اینڈ اٹس ضروری بیکاز یہ تو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, رائٹ. اور ڈینٹل کیئر تو ہم آنیسٹلی جب تک وہ دانت میں درد نہیں ہوتی کوئی جاتا بھی نہیں. اینڈ اٹس ایکولی امپورٹنٹ فار مینٹیننس آن ڈینٹل ایز ویل, بیکاز ڈینٹل سے بہت سی بیماریاں ہو جاتی ہیں جس کا ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے, بیکاز آپ کے نروس سسٹم اتنا قریب ہوتا ہے, ہارٹ تک آپ کی انفیکشنز جا سکتی ہیں. بالکل. ڈینٹل کیریز وغیرہ ہوتی ہیں اور سارا کچھ. تو دیٹس ویری گڈ ٹو نو. تو شفا کے علاوہ اگر کوئی ایسے ریسورسز ہیں کمیونٹی میں, کیونکہ آپ کا اتنا زیادہ سرکل ہے, وہ کیا ہیں؟ کچھ فارمیسی کے یا لیبس کے جو سبسیڈائزڈ قسم کی سروسز دیتے ہیں یا میڈیسنز ملتی ہیں, ایسے کوئی ہیں ریسورسز؟ جی ایبسلیٹلی. سو جب پیشنٹ شفا میں آتا ہے, کلینک میں آتا ہے, تو ڈپینڈنگ آن ان کو کیا کیئر چاہیے ہوتی ہے, ہم لیب ورک شفا میں کر سکتے ہیں. سبسیڈائزڈ ہمارے پاس کانٹریکٹس ہیں لیبس کے ساتھ. اس کے علاوہ ہمارے پاس ریفرل پروگرامس بھی ہیں. سو ہم پیشنٹس کو ریفر کر سکتے ہیں اسپیشلسٹ کے ساتھ, جن کے ساتھ ہم نے کوئی کانٹریکٹ بنایا ہوتا ہے, یا وہ چیپر اگری کرتے ہیں چیپر پیمنٹ کرنے کے لیے, سیلف پے پیمنٹ کرنے کے لیے, وہ بھی ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ فار ڈائگنوسٹک امیجنگ کے ساتھ بھی یوں ہمارے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں وعدہ دیتے ہیں کہ پیشنٹس کو کم پیسوں میں بیسکلی سروسز ملیں گی. تو یہ کیش پے کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی کافی بڑھتا جا رہا ہے. بالکل. پہلے جو ہے صرف انشورنس ہو تو آپ ہیلتھ کیئر تک پہنچ سکتے تھے, لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ کیش پے پہ بھی کافی پیشنٹس, شفا اور اس طرح کی بہت ساری آرگنائزیشن جو ہیں تھرو آؤٹ, ان کی وجہ سے یہ چیز اسپریڈ اراؤنڈ ہوتی جا رہی ہے. اور بہت سارے کمیونٹی کلینکس ہماری کرسچن کمیونٹی میں بھی ہیں جو ہیں, اور ہماری باقی جو کمیونٹیز ہیں, I'm sure انڈین کمیونٹیز جو ہے ان میں بھی ہے بہت زیادہ. تو یہ ایک کانسیپٹ جو ہے بڑا فائدہ مند ہے. تو اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر میں تو آپ کا ماشاءاللہ اتنا رول ہے اور سارا, تو اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انفارمیشن بڑھانے کے لیے کیا مزید ریسرچز یا کس طرح کی چیزوں میں انوالو رہنا چاہیے کسی بھی ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو؟
आई मीन रिसर्च तो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा होती है और हर जगह पे होती है. जो मैं रेकमेंड करूँगी अपने क्लिनिशियंस और नॉन क्लिनिशियंस बोथ जो हेल्थ केयर में जाना चाहते हैं, एक तो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं. हर स्पेशलिटी की डिफरेंट कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें आप जा सकते हो. अगर आप क्लिनिकल नहीं हो और आप मोर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हो, उसकी भी डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. देयर आर अ ग्रेट रिसोर्स टू गेट इन्वॉल्व इन. एक नेटवर्किंग के लिए अच्छा होता है, बिसाइड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने के लिए एक अच्छे एवेन्यू होता है. जब मैं स्टूडेंट्स को मेंटर करती हूँ या यंग प्रोफेशनल्स को मेंटर करती हूँ, मैं उनको हमेशा इंकरेज करती हूँ कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि अपनी कम्युनिटी नेटवर्क में जो ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोफेशनल उनमें पार्टिसिपेट करें, बिकॉज absolutely great resources. The other thing is there's different publications जो वो अपनी specialties और interests के लिए subscribe कर सकते हैं. एक organization for hospital executives is American College of Healthcare Executives, which is a national organization के people उसके अंदर कर सकते हैं. उस तरह आपकी finance के related है, HIMSS होती है, आपकी IT के लिए related. So depending on what you're interested in, there's definitely organizations out there. आप मुझे ये बताइए कि शिफा में भी मैंने सुना है कि मेंटल हेल्थ की कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, और मेंटल हेल्थ हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है और इसको अभी तक एक स्टिग्मा बनाया गया है. लोग जो है इसके बारे में खुल के बात नहीं करते. तो प्लीज़ बताइए मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ. जी, फॉर श्योर. मेंटल हेल्थ तो आपने जिस तरह कहा, इट्स सच अ स्टिग्मा इन द वर्ल्ड. कोई बात नहीं करता, कोई हेल्प नहीं लेता, किसी को सिम्टम्स भी नहीं पता को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के. तो देयर इज़ अ ह्यूज लैक ऑफ अवेयरनेस अराउंड एजुकेशन एंड देन जस्ट द डिजीज़ इटसेल्फ. सो जो शिफा, हमारी जो कम्युनिटी जिसको हम सर्व करते हैं, वो ऑलरेडी इतनी अंडर स्ट्रेस होती है, डिस्ट्रेस होती है. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ एक्सपैंड इनटू मेंटल हेल्थ. सो हमारा आइडिया एंड प्लान है टू गेट सम थेरेपिस्ट जो आपको फैमिली इंडिविजुअल दोनों कोचिंग करेंगे, थेरेपी देंगे. बिसाइड्स देयर इज अ रिसर्च दैट वाज डन इन शिकागो दैट शोज कि आफ्टर कोविड अबाउट 70% ऑफ द पेरेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उस रिसर्च के अंदर, 70% of them said that their children are more stressed and have more anxiety after COVID. So that's a huge thing, and us not talking about it is honestly a problem. And it's not even just that. अगर हम बात करते हैं our daily lives की और just the social issues that we have, it's really important कि हम उसको attention दें, because mental health can of course lead to other issues internally within the family or as internally from your own health perspective as well. So it needs to be addressed. It needs to be talked about in our community. So one of the other things other organizations actually do really well is Ibn Sina and a number of different organizations, they have a mental health conference in the fall as well. So I encourage participants and audience to learn more about it and then seek उसकी मदद की ज़रूरत है तो please उनको लेनी चाहिए. And both females and males, आदमी औरत बच्चे, I think everybody deserves to get the attention that they need. Very right. आप सही कह रही हैं कि मेंटल हेल्थ को स्टिग्मा बनाने की बजाय इसकी सही केयर और ट्रीटमेंट चाहिए. Yeah. हाँ, हमारी कम्युनिटी में. इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपने हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन जो की बड़ा फैंसी सा और ग्लैमरस सा लगता है कि बड़ी ऐसी डिग्री है, आसान नहीं होगी फॉर श्योर. तो उसके बारे में कुछ बताइए कि इस तरफ जो है अगर हमारे कुछ और नए लोगों ने आना है, बच्चों ने, तो क्या आपने पैथ लिया था और क्या आप उन्हें सजेस्ट करती हैं? परफेक्ट. नहीं, एब्सोल्युटली. आई थिंक ग्रोइंग अप तो सारे जिस तरह सारे देसी पेरेंट्स कहते हैं पाकिस्तानी इंडियन कि या तो डॉक्टर बनना है या तो लॉयर बनना है. तो माय पेरेंट्स आर द सेम, डॉक्टर या लॉयर. सो आई स्टार्टेड ऑन द हेल्थ केयर बिकॉज ऑनेस्टली ग्रोइंग अप इन पाकिस्तान यू आर सो क्लोज टू द डिस्पैरिटीज दैट आर देयर. जो लैक ऑफ केयर वहाँ पे अवेलेबल थी, आई गॉट टू सी इट वेरी क्लोज हैंड. सो हेल्थ केयर वॉज ऑलवेज समथिंग दैट आई वॉज इंटरेस्टेड इन. बट जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की तो आई वेंट टुवर्ड्स द क्लिनिकल साइड, बट वेरी सून आई रियलाइज कि मुझे क्लिनिकल नहीं होना. आई डिड फिजिकल थेरेपी बट आई रियलाइज आई लाइक टू टेल पीपल व्हाट टू डू. सो मेरा एक एडवाइजर था ड्यूरिंग कॉलेज, शी टोल्ड मी अबाउट हेल्थ केयर एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन का मास्टर्स. तो आई एट दैट पॉइंट आई started taking some management courses and then I researched different programs, and at that time George Washington at the time was a very well established program with a great
alumni network. So that's one of the reasons why I picked it. The other reason I picked it is uska requirement thi ek fellowship ki. So it was 2 years of a student program, like a study program, and then 1 year of a fellowship, which I thought at that point was very important to get some hands-on experience before you go into the job market. So that was really my way of getting into it. Uske baad, honestly, it's been a roller coaster ride. I actually had a chance to work with a number of different organizations across the world. I was in the Northeast for about 6 years, but I also worked with Cleveland Clinic in Abu Dhabi. They were opening up a 365-bed hospital. So what I would say to our younger students and even early careers is, ek to just take the chance, take the opportunity, get out of your comfort zone, because the more we're in our comfort zone, the less we experience in life. And then honestly, ask the questions, network, meet people. उस तरह आपका होता है कि एक तो आपकी network पलती है, but you learn so much more about different people's experiences. जो भी opportunity आपके knock करती है, उसको avail करो and make the most of it. Really, you'll get what you put into the opportunity or the work essentially. क्योंकि हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर देखा जाए तो फिजिशियंस जो हैं उनके अगर क्लिनिक देखा जाए या हॉस्पिटल देखा जाए, नर्सिंग होम देखा जाए, तो ये सब चीज़ें हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर डेवलप नहीं हो सकती. तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर कि आपकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ऑपरेशंस जो हैं, दे आर वेरी अलाइंड एंड यू नो अप टू डेटेड. अच्छा, इसमें ऑटोमेशन का भी आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है, और मैंने देखा है और हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे बहुत सारे फिजिशियन हजरात भी कि क्लिनिक्स में जो है, कई क्लिनिक्स में अभी तक पुराने स्टाइल का जो है ऑपरेशंस का सब चल रहा होता है, लेकिन बहुत सारे नए तरीके से भी चल रहे हैं जिद्दत के साथ, लेकिन कुछ हैं जिनको अपनी वही कंफर्ट जोन में रहना है. तो उसमें जो है ऑटोमेशन के लिहाज से, ऑपरेशंस को एफिशिएंट करने के लिहाज से आप क्या कहती हैं? जी बिल्कुल. एक्चुअली डॉक्टर हुमैरा, मैं आपका जो पूरा पहले वाला कमेंट था अबाउट प्रोफेशंस इन हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल 100% एक मैं उसमें कमेंट करना चाहूँगी कि एक तो ऑफ कोर्स हॉस्पिटल क्लिनिक्स आर द फंडामेंटल ट्रेडिशनल, बट I would encourage people to explore payers, especially US के अंदर payers, pharmaceuticals, life sciences. अब तो इतनी innovation हो रही है, अब तो इतने careers बन गए hospital administration में कि you know the sky is the limit. And I think going into the next point, absolutely, you know, I deal with a lot of physicians on a daily basis, and I've learned so much from them in my career. You know, I think with जिस तरह हमारी एज जा रही है, AI आ रहा है, automation आ रही है, I think a lot of the challenges एक तो हैं adoption to technology, right, which is equally important. Of course, there's been some key adoption because of the EMRs, establishment of the EMRs, implementation of the EMRs. So I would encourage physicians जितने भी वो कर सकते हैं, एक तो they can have resources internally, but then of course they can hire external resources to help them through that. Change management is huge right now in healthcare because it's really transitioning us from a traditional way of doing healthcare into the new future way of doing healthcare where AI is going to play a role. Ab to care pathways ban rahe hain with all the data that we collect from EMRs, bringing the patient to the physician. So marketing techniques, ab to itni innovation ho gayi hai with social media, ads, website development, you know, things like that. So having a robust strategy around what they want to do and how they're going to achieve it is really, really great. And what I would encourage them is that bahut si hoti hai ki hamare physicians clinical hote hain, they don't necessarily get that education around management, finances, business. So if they don't have those resources, to get them, because once you have that pathway spelled out and strategy, implementation is, you know, it's the key to getting them to what they want: more revenue, streamlined operations, especially right now where inflation's high, cost बढ़ती जा रही है. To contain and manage them, I would encourage them to do that. ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ती जा रही है और रीइंबर्समेंट्स आर गोइंग डाउन. बिल्कुल. सो वो उसको बैलेंस लाने की ज़रूरत है. तो आपका क्या ख्याल है, ये जो AI के बारे में बात हो रही है और बहुत सारे EMRs जो हैं उनमें अब AI के साथ, तो आपको लगता है कि इसमें बहुत सारी जॉब्स कट डाउन हो जाएंगी, या आप जो अभी इंडिविजुअल्स की स्किल्स हैं
ان کی پھر بھی ویلیو رہے گی؟ آئی تھنک انڈیویجولس کی ویلیو رہے گی. آئی تھنک جس طرح ہیلتھ کیئر آپ نے دیکھا ہے, آئی مین کووڈ واز اے پرائم ایگزامپل, اور ہمارا بالکل انڈسٹری شٹ ڈاؤن ہوگی اکراس دا گلوب. تو آئی تھنک اینڈ بسائڈز ہم اتنے بیکورڈز ان کلینکل انوویشن آف کورس از آن پوائنٹ, رائٹ, اٹس ان دا رائٹ پاتھ وے, بٹ ہماری جو مینجمنٹ اڈاپشن ہے وہ بہت سلو ہے. سو I think there's going to be still time جس طرح جب AI really will impact our businesses, our operations. کرے گی, of course, it will have to. And I think the more adoption we take, the sooner it'll be better for those organizations. They'll thrive more quickly. But I think it's going to be a little bit more slower than people are anticipating. Yes, I was reading other day کہ اب ایسے سافٹ ویئرس آ گئے ہیں کہ اگر پیشنٹ کا صرف آئی اسکین ہو جائے تو آپ جو ہیں اس کی ایم آر آئی کی ضرورت نہیں پڑے گی. یو ول نو ایگزیکٹلی واٹس ہیپننگ ان دا باڈی. تو دیٹس پریٹی امیزنگ, بٹ آئی تھنک اٹ ول ٹیک سم ایئرس, بٹ وی آر گیٹنگ دیئر. تو یہ کافی ہیلپ فل انفارمیشن تھی جو آپ سے ہمیں ملی, اور کووڈ کا جو لیسن ہے وہ آپ سمرائز کر سکتی ہیں ہمارے لیے تاکہ ہم لوگ آئندہ کے لیے پریپیئر رہیں. آئی ڈونٹ تھنک میں اس کا کوئی لیسن سمرائز کر سکتی ہوں, بٹ آئی تھنک وہی ہے کہ ایک تو you have to اپنی self awareness, self care is very important, maintenance is very important. But the other thing that we found out is we do not have enough people in healthcare. Like ہماری physicians کی shortage ہے, nurses کی shortage ہے, تو I would encourage کہ ہماری کمیونٹی میں زیادہ ہیلتھ کیئر کی طرف آنے کی ضرورت ہے. Exactly. تاکہ we are more prepared اگر دوبارہ کبھی اس طرح کی خدا نخواستہ کوئی پینڈیمک ہوتی ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ان سے بہت اچھی انفارمیشن مل رہی تھی, اور ہم دوبارہ بھی کوشش کریں گے کہ فائزہ کو بلائیں اور آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری انفارمیشن شیئر کریں. اس پروگرام کا اسپانسر رائٹ میڈیکل بلنگ ہے, جو کہ بہت ہی اچھے ریٹس پہ آپ کو بلنگ اینڈ کوڈنگ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, ہیوسٹن میں ہی موجود ہیں. اس کے علاوہ میں ہم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے.